Morning everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C Government College, Ajmer. बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एमएससी फाइनल सेमेस्टर 4th का पेपर 20C के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है इंसेक्ट बिहेवियर। इंसेक्ट बिहेवियर के अंदर भी हम जो करेंगे उसका नाम है सर्केडियन राइम्स या सर्केडियन क्लॉक्स। Besides routine diurnal activity, insects interact with one another at least for undergoing copulation या mating behavior. Number 2, parental care. Number 3, nest making behavior. Number 4, colonial insects demonstrate orientation or homing behavior. Number 5, symbolic communications or the dance language. For example, bee dance. The bee dance represents a direction related to the scene and related to the sun, and the second one is the length of the dance represents the distance to be flown. अब आपके सामने ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है फिलोपेट्री। फिलोपेट्री, व्हाट इज फिलोपेट्री? फिलोपेट्री क्या होती है? The behavior allows an insect to return to a single hole a few millimeters in diameter among a mass of thousands of apparently identical holes, all clustered together after a trip of up to several kilometers distance as long as years after viewing the area. This is known as philopatry. फिलोपैट्री में क्या होता है, अगर कोई इंसेक्ट अपने होल से निकल रहा है जहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, तो वो चाहे कितने भी साल उसको हो जाएं, चाहे वो कितनी भी लंबी दूरी तय कर ले किलोमीटर्स में भी, पर वो आकर के अपने होल पे ही रुकता है। इसको हम कहते हैं फिलोपैट्री। अ फ्यू इंसेक्ट्स माइग्रेट showing overwintering. They show the migratory behavior. For example, they are showing overwintering areas of the monarch butterfly, or number 2, intercontinental swarming of locust. As the insects are adapted to a variety of complex behavior, they have obviously developed the well-developed and organized physiological process of learning and memory. आज इस बिहेवियर पैटर्न के अंतर्गत हम जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है सर्केडियन क्लॉक और रिदमिक बिहेवियर। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर्केडियन रिदम्स या सर्केडियन क्लॉक क्या होती हैं? सर्केडियन क्लॉक्स आर इंटरनल क्लॉक्स और बायोलॉजिकल क्लॉक्स. These rhythms are the internal mechanism that provide a means of measuring length of time to a living being. These rhymes allows the animal to adapt their behavior in the best possible way to course of a day changing events. अब सर्केडियन क्लॉक्स हैं क्या? सर्केडियन क्लॉक्स जो होती हैं वो इंटरनल क्लॉक्स होती हैं, या वो इनको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जो कि मेजर कर लेंथ ऑफ द टाइम मेजर करने के काम में आती हैं, जिससे किसी भी इंसेक्ट का व्यवहार प्रदर्शित होता है. नाउ several insects are adapted to the circadian behavior throughout a day. कुछ पूरे दिन में circadian behavior show करते हैं. Such rhythmic behavior is detrimental by a highly specialized cell. Insect का ये जो circadian behavior होता है डे पूरी ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, डे लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए, वो एक स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा गवर्न होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लियल सेल्स या न्यूरॉन्स, और बोथ कॉल्ड द पेस मेकर, या हम इसको ग्लियल सेल्स, न्यूरॉन्स, और हम इन दोनों को हम पेस मेकर भी कहते हैं. अब ये पेस मेकर कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड ऑप्टिक लोब्स. ये पेस मेकर सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्रेन एंड ऑप्टिक लोब्स के बीच में स्थित होता है. इन ड्रोसोफिला, नंबर 1, द स्पेसिफिक पीरियड जीन per gene is expressed. Number 2, the pacemaker cell in Drosophila, it secretes a PER per protein cyclically. Number 3, the second gene, timeless, TIM gene,
regulates the accumulation of the per protein in the nucleus. The TIM protein is destroyed in the light and persists in the dark. Next is, as this protein is occurring in the negligible quantity during day, दोपहर में अगर इस प्रोटीन की क्वांटिटी नेग्लिजिबल होती है, then the protein transcription of the per and TIM proteins occurs in the later part of the day and they start to accumulate in the cytoplasm. TIM proteins facilitates the entry of per proteins into the nucleus, where they inhibit transcription of their own RNAs and no more proteins is formed. Destruction of TIM proteins removes the inhibition of transcription and RNA is produced again. ये किसने बताया था? ली इटल 1996. ली इटल 1996 ने क्या कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम प्रोटीन्स रिमूव्स द इनहिबिशन on transcription and RNA is produced again. It is further suggested that the per proteins, they act as another gene and they regulate various physiological activities. The innate rhythmicity, innate means inborn, जो जन्म से मिलती हैं. The innate rhythmicity of per gene is often related to the environmental diurnal cycle or any slight fluctuations in light and temperature. Light may first be perceived by the compound eye and then transmitted to the brain cell, or may fall directly upon the brain cells. Immunocytochemical staining with anti-sera against pigment dispersing hormone provides that the accessory medulla in the internal clock in the brain of Orthoptera, Blattaria and Diptera. Histamine, immunoreactive photoreceptor neurons of the compound eye, they do not directly contact the accessory medulla, but they provide photic input through intercalated interneurons. These intercalated interneurons, an extraocular photoreceptor organ with immunoreactivity to the photopigment cryptochrome, might provide an additional photic input to the clock. The electrophysiological study showed that the neurons resembling pigment dispersing hormone, immunoreactive neurons with processes in the lamina and medulla proper are probably involved in the light entertainment pathway to the clock. Ingestion assay shows that part of this pathway acts through GABA, GABA, an allostatin immunoreactive pathway. So this was about the circadian rhythms. On the next turn, I will be telling you about the bee language and the bee dance language and tail wagging dance, round dance, etc. Thank you.